also like to know how did you come over to Kashmir, what's your aim and what's your futuristic business endeavor. So Jay, over to you. Hey, yes. Thank you everyone for coming out. My name is Jake Vartain. Building applications and web apps and phone application. Who I met in Kashmir. But when we had the conversation at the big onset, today we are yourself, so we'd like to know about that. So at first we will mostly sell online and through my global brand. Kashmir, and we have been also for really long in US in this business, but it is wonderful. This is Qadri. We would like to know that. Some of my friends also would like to. Check. to Kashmir by my friend Qadri. Very like me, I'm a culture of And why did the kind of rise of AI and everybody having very short attention spans. There was you launch your website? What's your future endeavor in the sector going to be? Are we you would like to get into some higher end boutiques as well. But the majority of the sales are online. Sir, please tell us about this Qadri initiative. क्या था? देखिए आज बहुत सालों के बाद ये ऐसा हुआ है कि एक अमेरिकन कश्मीर आके उसने जो है हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड लॉन्च किया और इस ब्रांड का जो नाम है दिस इज़ कादरी और इसको ये अमेरिका में प्रमोट करेगा, सोर्स अपना जो है इन्वेंट्री यहीं से करेगा। तो इनका जो विज़न है ये चाहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं उनके साथ कैसे पश्मीने को इंट्रोड्यूस करें। तो इनका लॉन्ग टर्म विज़न है, ही वांट्स टू टेक इट टू द हाई एंड स्टोर्स इन अमेरिका। यूजुअली पास्ट में यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरेनर्स होते थे, उनके कारखाने होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसकी फिर से शुरुआत हुई। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये जो है ये इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पे ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं जेक जैसे लोग और यहाँ आए और ज़्यादा लेबल्स और ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे जो है अपना माल सोर्स करें, तो उसी से जो है क्राफ्ट एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ये बिलीव करते हैं फेयर प्रैक्टिसेस पे, अपने आर्टिसंस को का ख्याल रखते हैं। तो ये एक नया जो है इन्फ्लक्स ऑफ आइडियाज़ है, नया इनिशिएटिव है, फ्रेश ब्लड इनटू द जो सेक्टर है। तो होप इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। Sir, and this is with Pashmina only? मतलब अभी हाँ जी, ये पहले पश्मीना पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी इन्होंने किसी और क्राफ्ट पे ये नहीं किया है। तो इनका जो वेबसाइट है जिसको आप दिस इज़ कादरी के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इनके स्कार्व्स और स्टूल्स हैं। और इसके बाद जो इनका फ्यूचर प्रोग्राम है वो है अपैरल्स का, जिसमें पोंचूज़ होंगे, कैप्स होंगे। क्योंकि शॉल यूजुअली जो है थोड़ा मोनोटोनस या स्टूल मोनोटोनस हो, तो इसको आपको रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। तो वो रीइन्वेंट होगा जब आप अपैरल्स में लेंगे। तो इनका जो है इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च होगा वो अपैरल्स का होगा, पश्मीने का। Thank you so much, sir. So the process of making a Qadri shawl is one of the most elaborate processes that I've come across and had the pleasure to know intricately. There are about 12 steps to the process that starts with taking raw fur from the Changar goats in Ladakh, and using all of basically the methods that have been used. It's the same for many generations we use today, and so basically going from the fur, we hand spin the yarn and turn it into a product that's ultimately going to be weaved into the shawl. I can go more in depth if you would you like to go like all the way. So basically, once the yarn is spun, it's put into bundles that called hanks, and those hanks are essentially 250 grams of weight goes into making each shawl.
depending on whether it's going to be a natural color or whether it's going to be a color like you see over here. It determines whether it's going to be washed first or dyed immediately. And then basically once you have the dyed yarn, we have to make both the warp and the weft. So we have the horizontal and the vertical aspect of the shawls that when they go on the loom, that they can actually be weaved. So the vertical aspect of the shawl is dipped in a resin that makes it firm, so that when it's basically taut and a little sticky as once it goes on the loom, and this allows the horizontal aspect, which is more yarn that is on bobbins, to basically go through one strand at a time on the loom, and so going to this process of from the raw fur to getting the vertical aspects, the horizontal aspects all completed, and then ultimately weaving, finishing. Once it's weaved, another artisan has to clip the shawl and get any sort of imperfections out of it, which is it requires a lot of skill as well, because if they take one of the tools and clip it just slightly wrong, it can ruin the entire shawl. So seeing someone work with that level of concentration is a very interesting experience. And I